माय डियर फ्रेंड, जस्ट यू लुक अराउंड द वर्ल्ड. अभी आप जाके देखो, ईस्ट यूरोप इज मोर पुअर देन वेस्ट यूरोप. नॉर्थ कोरिया के पास कुछ है ही नहीं, कुछ बचा नहीं है. इन द एंटायर साउथ ईस्ट एशिया, CLMB. सी मीन्स कंपूचिया, एल मीन्स लाओस, एम मीन्स म्यांमार, वी मीन्स वियतनाम. दे आर द पुअरेस्ट रीजन. और वियतनाम ने भी कमर कस ली है. अभी आप देखो, वियतनाम इज अ बिकमिंग चैंपियन ऑफ लिबरलाइजेशन. वंस इट वाज ए सिंबल ऑफ सोशलिज्म. और जब जब वियतनाम के ऊपर बम अमेरिका मारता था तो इंडिया कहता था बहुत बुरा हो रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. वियतनाम में थैंक्स लॉट मेरे दोस्त को, तो बोलते तो हो. हम बोलते ही थे, केवल बात क्या कर सकते थे. उस बात को याद रखता है. ये देखो, कहा भी जाता है, बचनम किम दरिद्रम. अरे भाई, किसी को दे नहीं सकते थे तो मीठा बोल तो बोली तूने. देंगे तो बाद में देखा जाएगा. दैट वाज अ पॉइंट. बट माय डियर फ्रेंड, दीज स्टोरी बिकेम द पास्ट एंड देयर टू मच चेंज आफ्टर 9. देखो, ये साउथ एशिया में हिस्टोरिकल क्यों है? 90 पहले झगड़े सबके साथ थे. हम एक ऐसे रीजन है जो झगड़े को आज भी निभाते हैं. दैट इज ए क्रिटिकल. अब इंडिया पाकिस्तान का जो झगड़ा पहले था वही झगड़ा आज भी है. झगड़ा तो ईस्ट एंड वेस्ट यूरोप में था, खत्म हो गया. ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी में था, यूनाइटेड हो गए. ये सब एक हो गए. हम भी कभी एक होंगे. आइडिया ऑफ अखंड भारत. नो 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 नो. यू आर डाइवर्टिंग द डिबेट. We are not talking about Akhand Bharat. We are simply, because see, in what happens in regional economic integration, we are in Akhand Bharat, so we are going to dilute sovereignty of Pakistan, Bangladesh. But what happens in regional economic integration, we are respecting their sovereignty, their decisions, and with the same time, we want to cooperate with them. अखंड भारत के साथ कंफ्यूज मत करो, वो अलग आइडिया आ जाएगा. वो कल दे में भी कल्चरल, देर में कल्चरल आइडिया हो सकता है. बट IR के लिए वो फिर अब अखंड भारत यार, पाकिस्तान तुम्हारा जान ले लेगा अखंड भारत कहोगे. now you can now you can write few things. Next point. CLMB. See, they're all socialist blocs. CLMB. Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam. Next point. Largest and most populated nation in Southeast Asia. Largest and most populated nation in Southeast Asia. Largest and most populated nation in Southeast Asia, Indonesia. Indonesia became a leader. Indonesia became a leader for strengthening regional economic integration, but in case of South Asia, India was hesitating. To make a regional integration in South Asia. India was hesitating to make a regional integration in South Asia. Regional integration in South Asia due to fear of lobbying of a smaller nation against India. Due to fear of lobbying of
a smaller nation against India? Due to fear of lobbying of a smaller nation against India. On the other hand, Pakistan opposed any economic integration. On the other hand, Pakistan opposed any economic integration which will be helpful for establishing hegemony of India in the region. Establishing hegemony of India in the region. Hegemony of India in the region. So that's very interesting. तो आप देखोगे कि यहाँ मतलब counter, that is the point in SARC. You know that former president of Bangladesh, Ziaur Rahman came with the idea of SARC. Very interesting point. Even it should have been done by the largest nation of this region, India. But the fact is that India was very much hesitant. Pakistan was very much suspicious. And this suspicion and hesitance still goes on. Therefore, how we can imagine? Because the fact is that if any person who know the ABC of international politics, अब देखो बात बड़ी सिंपल सी है. You cannot purchase some goods from the shopkeeper where you are receiving threat of life. बाकी शॉपकीपर के पास इसलिए आप जा रहे हो कि हम उसके पास टूथब्रश खरीदना चाहते हैं, लेकिन यू आर फियरिंग दैट पर्सन माइट किल समवन, तो आप कैसे जाओगे? एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट. If we are having the security threat from any country, you cannot imagine about any cooperation. And what is the precondition of cooperation? Trust. Security community trust deficit is a major stumbling block in the South Asia. Trust deficit. Still, you know that Pakistan claim. Pakistan what claiming that India is looking to dismantling Pakistan. That is a Pakistan claim. And how Pakistan is sustaining the cross-border terrorism against India. So it is a matter of fact that Pakistan is involved in a kind of a proxy war against India. In that condition, SARC was bound to fail. It ultimately failed. It could not do anything in the past 35 years. How we can imagine the success of any regional economic organization? First, comparing European Union and ASEAN. That is one way. Second, let us see the goal which is established by SARC itself. That is second criteria. Because if SARC could not obtain the goal which was prescribed by SARC itself, and if we want to calculate the success of SARC, therefore we can assume that even European Union, ASEAN, they registered a huge economic growth rate within 30 years. And SARC is established way back in 85. As of now, we are approaching almost for the 40 years. Nothing happened. इसका मतलब सीधी सी बात है, we don't have any faith in SARC. तो अभी तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने यही काम किया. देखो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या किया. Otherwise, unnecessarily engaging in SARC is futile. Therefore, look for some new partner. Therefore, we are going ahead with mistake. अभी SARC में आप देखोगे SARC का तो हाल ये है कि आफ्टर 2018 नो समिट वाज हेल्ड इन फैक्ट. और उसके बाद क्या हुआ? ड्यूरिंग कोरोना वंस PM even organized online meeting, but Pakistan was not willing to turn up in the meeting. तो भाई यहाँ देखो इंडिया पाकिस्तान के बीच कैसा मुकाबला है, बच्चों जैसा. डिप्लोमेसी में ऐसी बातें नहीं होती, IR में ऐसे थोड़ी होते हैं. If we are having some hesitation, reservation, but what is the problem in the engagement? Diplomatic. अरे भाई तो बातचीत करें, क्या प्रॉब्लम है? ये तो ओपन होना चाहिए. बट इंडिया एंड पाकिस्तान देयर वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशन, जहाँ बातचीत ही बंद है. बिकॉज एंटायर डिप्लोमेसी टेल्स दैट एटलीस्ट वाई वी आर शटिंग द डोर फॉर द इंटरेक्शन. इवन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर देयर वॉज अ
there were channels were open for the communication talk between USSR and US. Here in case of India, we are not finding out their channels. तो मामला तो सब गड़बड़ है, इसीलिए वी आर नॉट होपिंग फॉर द रिवाइवल ऑफ सार्क. बात तो बहुत क्रिटिकल है बट ट्रू है. लास्ट पॉइंट आप लिख लो. नेक्स्ट. by 1980s, with the rise of Asian tigers, ASEAN got thrust of economic development. ASEAN got thrust of economic development. And after disintegration of Soviet Union in 1991, entire Southeast Asia became the part of ASEAN. Entire Southeast Asia became the part of ASEAN. And ideological division once existed in ASEAN disappear after 1991. And now Vietnam became the champion of economic liberalization. Now Vietnam became the champion of economic liberalization. And even liberalization and globalization after 1991. And even after liberalization and globalization in 1991. Liberalization, globalization, 1991 couldn't change the prospect of South Asia. Couldn't change the prospect of South Asia due to anti-India policy of Pakistan. Due to anti-India policy of Pakistan. एंटी इंडिया पॉलिसी पाकिस्तान. तो ये देखो, ये कंपैरिजन है कि वाई आसियान कुड became a powerful medium of regional economic organization. SARC was lagging behind, and now all the 10 members became the part of ASEAN. And don't you think that even recently we are witnessing Ukraine crisis? But these players are very important. And now, even now, Indonesia is even importing oil from Russia. Indonesia is not listening the sanction of European Union. And now ASEAN is still away from the entire politics. Although sometime we can say there is influence of geopolitics in ASEAN because of South China Sea dispute. So we cannot ignore South China Sea dispute. But even that is a very much, in a shadow. The matter of fact is that even Southeast Asian nation want to cooperate with China. China is looking towards Southeast Asia. And now
ASEAN is becoming a new engine growth of the entire world. And because of ASEAN, because of East Asia, don't you think that Euro-centric, Euro-Atlantic world is changing towards Asia-Pacific world? And whether this Asia-Pacific is going to change into Indo-Pacific, now time will tell. Because now India is also emerging as one of the fastest growing economy. Entire size of ASEAN economy, if we are comprising all 10 members, the population of all 10 members including 50 crore. देखो ये हमारी साइज है. Even their population, if we are putting together all the 10 members, now they are reaching up to the 50 crore population. Alone we are 140. But even let us see, now this is the second fact how we can realize is the economic prosperity. Size of ASEAN economy is almost approaching $4 trillion, just equal to India. Just equal to India. But you, my dear friend, believe me, that is true. If 2024, if a stable government repeat in 2024, then don't forget the fact that prospect of India is more. Population means market. अरे भाई इंडोनेशिया में इतना मार्केट कहाँ आएगा, हमारी तरफ देखना ही पड़ेगा ना. चाइना में थोड़ा सेचुरेशन हो रहा है. And that is the point. Something are very much settled in international politics. And settled is means China is going to compete US and India is going to fill the place of China. And that is point. China is too big to fall. यदि कई बार हम यज्ञ करते हैं चाइना का बेड़ा गर्क हो जाए. हमारे देखो यज्ञ होता है, यज्ञ भी हम कर रहे थे, इंडिया को जिताने के लिए कुछ हो नहीं पाया. बट वी आर वेरी इमोशनल, तो हम यज्ञ में शामिल होते हैं. कई बार पीपल बिकम वेरी हैप्पी बिकॉज कॉन्स्पिरेसी थियरी सेज दैट sooner or later China will dismantle. But economic theorists are not relying over that assumption. Because China with $14 trillion economy कैसे collapse हो जाएगी? On PPP it may be 18. अच्छा एक्चुअल पे भी नॉमिनल पर अगर 18 है तब तो यूएस की फिर कितनी है? 22. तो फिर तो 1-2 साल में यूएस पीछे हो, चाइना आगे, चाइना आगे, इंडिया आगे, साउथ कोरिया, देन जापान, पूरी दुनिया पे छाने वाला है एशिया. बिग टर्न अराउंड इन द वर्ल्ड. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तभी तो अब देखो एशिया का टाइम आने वाला है. अब चाइना थोड़ा सा मामला गड़बड़ा देता है कई बार, तभी चाइना कुछ समझ नहीं रहा है. लेकिन इंडिया भी थ्रू अगर ऐसे ही चलता रहा तो मामला तो आगे बढ़ेगा. तो देखो वियतनाम में भी ए सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, देयर में भी ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. पॉपुलेशन 6-7 ही करोड़ तो है ना. कितना कर लोगे आप, कितना मार्केट जनरेट कर लोगे? द ग्रेटेस्ट फ्यूचर लाइज इन इंडिया. दैट इज चेंजिंग पॉइंट. तो आप देखो 90 पहले हम भी चेंज थे, अब तो यहाँ भी लिबरलाइजेशन है, हमारे पास भी लिबरलाइजेशन है. अब तो सारे फैक्टर खत्म हो गए. हाउ वी कैन इवेल्यूएट आसियान? तो अभी देखो ये सारी बातें हमने कंपेयर कर ली. आसियान क्यों फेल हुआ, सॉरी सार क्यों फेल हुआ, आसियान क्यों आगे बढ़ा? रीजन इज वेरी कॉम्पेरेटिव. और कंपेरेटिव लिखना भी चाहिए. एग्जामिनर पूछे ना पूछे, कंपेरेटिव लिखना चाहिए. ऐसा थोड़े कंपेरिजन करने को बोल रहे तभी कंपेरिजन करेंगे. लेकिन लेट अस सी व्हाट इज द prospect, what is growth of ASEAN after 90? So next heading करना है. अच्छा इस डेटा को आप फिर चेक कर लेना. मुझे लगता है पीपीपी पे वो अभी उस पे नॉमिनल पे तो 14 ही ट्रिलियन है. पीपीपी पे तो अच्छा नॉमिनल 14 है, उसका 18 है. तो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखोगे? हाँ, ग्रोथ ऑफ आसियान इन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड. ग्रोथ ऑफ आसियान इन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड. ग्रोथ ऑफ आसियान इन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड. और अब देखो अब तो सब 10 मेंबर्स हो ही गए. इफ वी वांट टू लुक द ग्रोथ ऑफ आसियान, देन फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन.
First, in terms of economic integration, and if you remember the European Union, there are the various stages of economic integration from preferential trade, free trade, custom zone, common market, and there is economic integration. Europe, it means there is a stages. What is stages? That is a preferential trade, where we are reducing rate of tariff, and then free trade. These are steps of integration. Then common custom. It is the common market. Common market, and then economic union. Economic union. European Union is on the top. You stand here, that we have discussed yesterday, because common economic policy, common currency. Economic union means even the economic policy is also decided by the union. Therefore, sovereignty of nation and state to some extent compromised. But here, ASEAN is now approaching common custom zone or to common market. Here, ASEAN is here. Common custom. Now they are looking for the common market, and we know that. And अब बताओ, अब सार्क कहाँ है? कहीं है ही नहीं सार्क. इवन सार्क में प्रेफरेंशियल ट्रेड का एग्रीमेंट हमने कर रखा था, फ्री ट्रेड का भी, लेकिन कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया. इस लेवल पे भी अब सार्क को देखोगे तो यू आर फाइंडिंग आउट वेरी डिस्करेजिंग सीन. वैसे भी आप देखोगे अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से, बिकॉज प्रेफरेंशियल ट्रेड मीन्स इवन reducing trade, free trade means zeroing the trade, common custom means entire region will be treated as a single custom zone. Then common market means we can export, import things from anywhere, and we can establish our companies' factories in anywhere in the market. And thereafter common currency. अब आप देखोगे why ASEAN is having very prospect, क्यों ASEAN मूव कर रहा है. ASEAN is not increasing on the line of European Union. यूरोपियन यूनियन ने क्या किया था, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के साथ साथ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी, ये इन्होंने नहीं किया है. और शायद यूरोपियन यूनियन का एग्जाम्पल इनके लिए बड़ा हो जाए. दैट इज पॉइंट, दे आर रिकॉग्नाइजिंग सॉवरेंटी ऑफ नेशन स्टेट एंड द नेबर इंटरफियर इन डोमेस्टिक अफेयर ऑफ अ नेशन. कई बार तो ऐसा हो जाता है, कहते हैं म्यांमार को, कहते तो है कि भाई डिक्टेटरशिप मत लाओ, लेकिन ऑन दैट बेसिक दे आर नॉट denying the cooperation with Myanmar. So they are going ahead with Myanmar in Thailand, but sometimes they speak for democracy. Therefore, for ASEAN, democracy, human rights is not a criteria. That's just like in European Union. तो ये क्राइटेरिया वहाँ चलेगा ही नहीं. तभी तो हम कहते हैं वी कैन नॉट रिपीट ASEAN एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. नाउ यूरोपियन यूनियन मतलब आपको बिना डेमोक्रेसी का मेंबर हो ही नहीं सकते. यहाँ ऐसा नहीं है. बिना ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड का मेंबर हो ही नहीं सकते. यह ऐसा नहीं है. एंड व्हाट इज यूनिक, यू कैन कंपेयर. फर्स्ट पॉइंट, द cumulative size of economy of ASEAN the cumulative size of economy of ASEAN is approximately $3.5 trillion. Is approximately $3.5 trillion. And connectivity and transportation. Connectivity and transportation is already better in the region. Connectivity and transportation is already better in the region. आपको पता है कि अगर हम
आज की डेट में मैं दिल्ली से इस्लामाबाद जाना चाहूँ तो एयरलाइंस नहीं है। अभी तो हमारी कनेक्टिविटी का हाल है। और मतलब मोइत्री एक्सप्रेस वो चलती है कि कोलकाता और ढाका के बीच में, कोलकाता ढाका के बीच में जो जर्नी वो लेती है ट्रेन 4 घंटे, कस्टम चेकिंग होती है 5 घंटे। ये हमारा फियर है। तो आप देखो इस फियर के चक्कर में, टेररिज्म के चक्कर में हम पाकिस्तान, या तो हमारे पास देखो हमारे पास क्या है साउथ एशिया में। फर्स्ट वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। व्हाट इज इकोनॉमिक इन? बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड कस्टम। ये बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होने चाहिए और ये डिजिटल होने चाहिए। वो साउथ एशिया में बिल्कुल नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया में कर दिया गया है। अच्छा, इनकी जियो पॉलिटिक्स भी है कि बहुत कम नेशन वहाँ लैंड लॉक है, तो चाहे सी के थ्रू चाहे रोड के थ्रू, एंड दे हैव मेड अ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हियर दे आर रिपीटिंग चाइना, दे आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम चाइना। तो चाइना ने 78 ऑनवर्ड्स इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया था, डेंग शाओपिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म खूब किया, इन्हें सारी बात कह दी। साउथ एशिया में आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कनेक्टिविटी ही नहीं है। कनेक्टिविटी नहीं होगी तो ट्रेड कैसे आगे बढ़ेगा? तो देयर इज लिमिटेशन। दैट इज अ पॉइंट। साउथ इवन दे आर फुलफिलिंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। हमारे यहाँ तो है ही नहीं है। क्या लिखा आपने? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन। बैंकिंग मतलब एस बी। मान लो आप जा रहे हो इस्लामाबाद में कोई ट्रेड, कोई कंपनी खोलने, तो ये पैसा कैसे रख के जाओगे? पैसा कैसे वहां पे ट्रांसफर करवाओगे अपना? बैंक में लेके जाओगे, वो आप ही सही छीन लेगा रास्ते में। और कितना पैसा बैंक में लेके जाओगे, ये भी तो प्रॉब्लम है। और इसलिए आप देखोगे, डेट वेरी इंटरेस्टिंग, जब ये हुआ कि पीओके और कश्मीर के बीच में ट्रेड होगा, इट वॉज ओनली बार्टर ट्रेड, विदाउट मनी एक्सचेंज, विदाउट बैंकिंग। अब आपके पास ट्रेड करना है लेकिन यू डोंट नो एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट ऑफ इस्लामाबाद। आपके पास मार्केट की इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, वही नहीं है। क्यों? कम्युनिकेशन नहीं है। एंड देन कस्टम, वंस आई वेंट इन ट्रेड फेयर, तो ट्रेड फेयर मैंने पूछा कि भाई पाकिस्तान का स्टॉल खाली क्यों है? इस बार तो आया ही नहीं था, पिछली बार मैं बात कर रहा हूँ। कस्टम वालों ने रोक रखा है। अननेसेसरी हैरेसमेंट। तो कम्युनिकेशन नहीं है, सब चीज़ नहीं है। अदरवाइज मनमोहन सिंह का सपना देखो तो फिर तो हम जाएं, फिर पाकिस्तान को इतना बड़ा फायदा होगा, बिकॉज इंडियंस कैन गो टू द अफगानिस्तान बाय पाकिस्तान, खैबर पास से होते हुए। वो जाने ही है तो। नेक्स्ट। हाँ, जस्ट रिमेंबर लिबरल्स, you will find out every answer. Liberals and functionalists, you will find out enough reason for cooperation. If you want to fight, remember realist. Next point. Now, the largest trading partner of ASEAN. Now, the largest trading partner of ASEAN, China. Now, largest trading partner of ASEAN is China, which is in fact turning point. And amount of total trade is almost $600 billion. Let us see the amount. Can you repeat? It's China, and that is a turning point because Southeast Asia, because Southeast Asia is considered as a region of influence of US. Southeast Asia is considered as a region of influence of US. Region of influence of US, and in the Southeast Asian nations, Southeast Asian nations have also joined the Road Build project. Southeast Asian nations have also joined the Road Build project.
full stop. Moreover, China is a part of ASEAN plus 3. China is a part of ASEAN plus 3. And by 2020, China also founded RCP. China also founded RCP, which include every member of ASEAN. Which include every member of ASEAN plus 3 plus Australia, New Zealand. Every member of ASEAN plus 3 plus Australia, New Zealand. Plus 3 plus Australia, New Zealand. अब देखोगे कितना बड़ा चेंज आ रहा है. Earlier, this is an indication that why 21st century is Chinese century. This is again proves because earlier US was the most dominant power in the Southeast Asia from Cold War, and earlier US was very fearing from the very much fearful from Soviet Union. And very interesting chain of event. In 71, China became the close to US, but now same China is threatening the challenge and hegemony of US in the region. अब आप देख लो, even every Southeast Asian nation is so complex. They are interdependent with China. They can't go away. And this is challenge of the world. In that way, you can say that next century is really ASEAN and particularly China. Next point. अच्छा बस इसमें कौन अभी भी बता दे. See why ASEAN plus 3 and what is a sign of a major power? Because there is one problem in the all capitalist economy, especially export oriented economy. तो आप देखो after 90, even that is the story of rise of China. The largest trading partner of ASEAN, that was obviously US. अब जरा सोच के देखो, US तो पीछे गया, जापान पीछे गया, now China is coming to see very strongly. और यहाँ पे जब इनको बिकॉज इन 1997 ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस दैट वाज इरप्टेड इन आसियान, तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के पार्ट में ऐसा होता है. बट आफ्टर 97 आसियान कुड नॉट रिसीव प्रॉपर असिस्टेंस फ्रॉम द IMF. Thereafter, they have decided that is a no Chiangmai initiative. Chiangmai means there is a university in Thailand, and it was initiative. Now ASEAN plus 3, these nations came forward for rescuing ASEAN. And in that context, you can write rise of China, and rise of Asia. Rise of China and rise of Asia is the most important event of 21st century. Is the most important event of 21st century. Most important event of 21st century in the recent crisis of Ukraine. In the recent crisis of Ukraine, ASEAN members are not willing to take a side.
ASEAN members are not willing to take a side, and and they are eager to keep itself away. They're eager to keep itself away from any probability of new Cold War. They're eager to keep itself away from any probability of new Cold War. ASEAN finalize a free trade agreement with ASEAN finalized the free trade agreement with US, China, Japan, India, US, China, Japan, and India. Japan and India. Because 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 ASEAN nations because ASEAN nations are primarily ASEAN nations are interested primarily interested to ensure their economic strength. देख इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अभी को थोड़ा सा चेंज कर ले मामला थोड़ा चेंज कर ले एंड दैट इज अ जियो पॉलिटिक्स. सो नेक्स्ट हेडिंग कैन राइट आसियान. क्योंकि आईआर में देखो आप कभी भी केवल इकोनॉमी नहीं होती. आईआर में केवल इकोनॉमी नहीं होती. वी हैव टू टॉक अबाउट जियो पॉलिटिक्स टू. एंड वंस वी आर टॉकिंग ऑफ जियो पॉलिटिक्स सो ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक विद South China Sea. So now there is new theater. Although as far as uh, Southeast Asia is concerned, so they are very much keeping itself away from the entire politics between US and Russia, and then China and Russia. But one thing is very important: if China is looking for the occupying the Taiwan, that is going to impact over the entire region because South Korea, Japan, they have already increased their defense budget because of Ukraine crisis. The matter of fact is that again you can compare between the ASEAN and South Asia. Look the traditional point of view of ASEAN. ASEAN has declared itself as a nuclear free zone. Let us see in South Asia. Nation states are competing for getting more and more nuclear weapon, particularly Pakistan. Pakistan is having more nuclear weapon in comparison to India. Let us see the crazy neighbor and our younger brother. But here, and nuclear free zone simply means they are neither allowing nuclear submarine, they will not deploy nuclear weapons, and they will not manufacture nuclear weapons. That was the place of ASEAN. And interesting point, ASEAN is very much having the economic interest with China. But we can't even ignore geopolitics. Why geopolitics is very important? लेकिन उसके पहले बड़ा कंपैरिजन आप कर लिख लो आसियान वर्सेस यूरोपियन यूनियन. देन वी कैन गो इन जियोपॉलिटिक्स. अब लिख दो नहीं आपने क्या हेडिंग लिखा तो नहीं जियोपॉलिटिक्स. अगर लिखा हो तो नियर यू कैन स्ट्राइक डाउन. तो ये कंपैरिजन लिख लें कि यूरोप वर्सेस आसियान. देन वी कैन कम इन द जियोपॉलिटिक्स. EU वर्सेस आसियान. अच्छा मुझे पहले ही बताना चाहिए था कि कोई बात यहाँ भी हम कंपैरिजन तो वहाँ भी कर सकते थे.
दैट इज कंपेरेटिव. वी आर कंपेयरिंग आसियान वर्सेस सार्क, यू वर्सेस आसियान. कहीं भी आप करोगे, बिकॉज दिस वाज द क्वेश्चन वंस इन मेंस. डू यू थिंक दैट European integration of European Union can be replicated across the world? And replication is difficult. We can we can somehow imitate, learn some experiences, particularly economic. Imitating, copying may not be possible because conditions are different. Yeah, next point you can write. Introduction में liberalism, functionalism, that I have told you earlier. कहीं भी आप तो देखो, कहीं भी कॉपरेशन की बात है, स्टार्ट फ्रॉम लिबरलिज्म. रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात है, स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनलिज्म. और कई बार हम जियो पॉलिटिक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जी इकोनॉमी से भी. बड़ी सिंपल सी बात है कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना. तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं. क्या लिखा आपने पहला? यस, हाँ. यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन इज द मॉडल ऑफ European Union is the model of regional economic integration. European Union is the model of regional economic integration. And as far as economic integration is concerned, as far as economic integration is concerned, economic integration is concerned, ASEAN is following the footstep of EU. ASEAN is following the footstep of EU. Intra-regional trade in European Union. Intra-regional trade in European Union goes up to 50%. Intra means trade that is within the region. Intra-trade within EU reach up to the 50%. In ASEAN, it is almost 25%. In ASEAN, it is almost 25%. But replicating or copying the EU, is not a possibility, is not feasible. Copying or replicating the EU is not feasible because human rights, democracy, and democratic form of government are the primary condition for joining EU. Human rights and democracy are the primary condition for joining EU. Are primary condition for joining EU, which is not applied for the ASEAN. Which is not applied for the ASEAN. Full stop. EU. EU promoted the flourishing of intergovernmental organization. EU promoted the flourishing of intergovernmental organization
promoted the flourishing of intergovernmental organization like European Parliament, European Commission, European Commission, European Council. European Parliament, European Commission, European Council. Member of ASEAN. Member of ASEAN rely over the idea of Asian values. Asian values underline. Member of ASEAN rely over the idea of Asian values. Asian values, which is a part of Bangkok Declaration. Which is part of Bangkok Declaration. ASEAN, members of ASEAN argued that part of Bangkok Declaration, members of ASEAN argued that they want to preserve their own culture. They want to preserve their own culture. And they only want to borrow technical and economic. They only want to borrow technical and economic assistance from the West. Technical and economic assistance for the West, from the West. Culturally, EU is very much homogenized. Culturally, EU is very much homogenized due to dominance of Christianity. Culturally, EU is very much homogenized due to dominance of Christianity. But Southeast Asia is too much diverse. Southeast Asia is too much diverse, which includes Islam, Hinduism, Buddhism. चाइना में कौन सा रीजन फॉलो होता है? कन्फ्यूशियस. क्या लिखा आपने? इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड द कन्फ्यूशियस. एंड द कन्फ्यूशियस. तो अब देखो, दे आर फॉलोइंग डिफरेंट पाथ. तो वो कहते हैं कि वी कैन बोरो टेक्नोलॉजी, वी कैन बोरो इकोनॉमी, नॉट आवर कल्चर. तो एंड अब आसियान देखो, आसियान वैल्यूज में कहा भी जाता है. अब आप देखोगे वेस्टर्न सोसाइटीज आर वेरी मच इंडिविजुअलिस्टिक. व्हाट दे आर सेइंग दैट एशियन सोसाइटी मीन्स, एशियन सोसाइटी में क्या होता है? द वैल्यू ऑफ कम्युनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, फैमिली इज मोर इंपॉर्टेंट. कभी वेस्ट में आप जाओगे आपको फैमिली नहीं दिखेगी. वेस्ट में मतलब इंडिविजुअल इज अ रूटलेस पर्सन. और इसलिए एशियन वैल्यूज़ का जो आइडिया आया सेट बाय महातिर मोहम्मद, उसके बाद इन लोगों ने बैंकॉक डिक्लेरेशन का पार्ट माना कि वी वांट टू प्रोटेक्ट. और कई लोगों ने कई क्रिटिसाइज, वेस्टर्न क्रिटिसाइज क्या करते हैं कि दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, देयरफॉर दे आर कमिंग विद दिस एशियन वैल्यूज़. क्योंकि इनके हमारे यहाँ क्या है, वी आर रिस्पेक्टिंग टुवर्ड्स अथॉरिटी. आप देखो, आप इतने बड़े स्टूडेंट हो गए हो, कई बार आप आके विश करते हो टीचर को, दैट इज़ वेरी समथिंग बिग. आप जानते हो यूरोप ऐसा नहीं होता. बच्चे हेलो हाय कह दिया और कभी गन निकाल के शूट कर दिया. हमारे यहाँ तो इवन द बच्चे दे आर टचिंग फीट. और हमारे तो स्टूडेंट थे संस्कृत लिटरेचर के थे, वो ही वाज डूइंग PhD फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो वो क्या साष्टांग दंडवत मारते थे मेरे साथ.
यार ये सब काम मत किया करो। अभी एमपी का एक बच्चा है मेरे पास उधर, तो वो कहीं भी रोड पे दिख जाएगा तो बिल्कुल ऐसे घुटना उठना टेक के बिल्कुल ऐसे करेगा। हमने कहा यार ये सब क्या करते हो तुम लोग, दैट इज आवर पार्ट ऑफ कल्चर। तो ये तो देखो वेस्ट से क्या है, दे आर सेइंग दैट नो वी आर नॉट बोरिंग कल्चर फ्रॉम वेस्ट। वेस्ट का कल्चर क्या है, इंडिविजुअल सेंट्रिक, मेटलिस्टिक, सेकुलर। ये कहते हैं ना, नो भाई वी वांट टू कंटिन्यू विथ आवर रिलीजन नॉट अ सेकुलरिज्म, सो दे आर नॉट रिलाइंग अवर फिलोसफी ऑफ सेकुलरिज्म। और इसलिए वो कहते हैं भाई आपकी डेमोक्रेसी हो सकता है हमारे कल्चर में, बिकॉज हियर वी आर गिविंग रिस्पेक्ट टू अथॉरिटी। हमारी इतनी डेमोक्रेसी नहीं है। नॉर्वे में अब देखो वेस्ट का कल्चर क्या है, नॉर्वे में रहने वाले मोर देन 1000 इंडियंस दे आर रिक्वेस्टिंग टू एम्बेसीज, हमारी एम्बेसी को रिक्वेस्ट किया है कि हमारा बच्चा दिलवा दो, बिकॉज नॉर्वेजियन गवर्नमेंट हैव टेकन आउट द चाइल्ड। क्यों ऐसा है, देखिए हमारे माँ क्या है, कभी माँ गुस्सा होती है, पिता गुस्सा, दो चार थप्पड़ मारी थे बच्चे को, और हमारे यहाँ पिटाई कुटाई। जस्ट आई वांट टू टेल वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हमारे एक फिजिक्स के टीचर थे, उन्हें किसी बच्चे को इतना मार दिया कि बीमार पड़ गया वो। मतलब दिस वाज ए कॉमन पैटर्न हमारे स्कूल में, तो ऐसे कॉमन। वही तो बच्चे आते हैं तो सर आपने कुछ बोला मुझे हर्ट हो गया, हम कह इधर आओ तो, ये हर्ट क्या होता है। कमाल की बात है यार, हम लोग तो उस जनरेशन के लोग हैं, और इतना धुनाई करते थे। वो फेबुलस टीचर ही वॉज, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो मतलब उतना मार दिया उसको कि 10 दिन स्कूल नहीं आया। तो ही वॉज वेरी क्यूरियस, मैंने पूछा वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा, वो सारे डॉक्टर फेल हो गए। इतना टेरर उसके मन में बैठ गया, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। तो किसी ने बताया कि अरे भाई आपने उसको इतना पीट दिया था कि वो तो मरने वाले का घर पे है। देन ही टीचर वेंट एट स्टूडेंट, उन्होंने सच में अपोलॉजी मांगी, और उसके बाद तो वो जब स्टूडेंट आना ही बिकेम टॉपर, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई इनसे पीट लो एक बार। दैट वाज द पॉइंट, दिस इज आवर एशियन कल्चर, एशियन वैल्यूज। तो हम फैमिली के साथ जाते हैं ना, कभी अब देखो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते हैं, अमेरिकन आते हैं तो सिंगल होते हैं। अब हम कहीं, हम इसलिए कहीं फॉरेन टूर पे जा नहीं पाते, हमारे चुन्नू मुन्नू सबको कहाँ साथ लिवा जाए। वो कहते भैया दादी जी और इकट्ठा हो जाती है, हम कहते भाई ने कहीं जाएंगे, यूरोप थोड़ी है कि आप अकेले निकल लोगे। हमारे यहाँ अकेले निकल लोगे, दादी अलग प्रॉब्लम में करेगी, माँ अलग प्रॉब्लम करेगी, भाई अलग प्रॉब्लम करेगा। दिस इज फैमिली, फैमिली इज इम्पॉर्टेंट, अथॉरिटी इज इम्पॉर्टेंट, एंड रिलीजन इज इम्पॉर्टेंट। दैट इज द पॉइंट, वी कैन नॉट रिप्लिकेट द एशियन वैल्यूज एवरीवेयर। तो उन्होंने मॉडल अपना लिया। तो अब ये नहीं कि डेमोक्रेसी लाओ, ह्यूमन राइट्स लाओ, भाई वो हम नहीं ला सकते। इन इकोनॉमिक कॉपरेशन तो करेंगे, बट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं ले सकते, बल्कि वो तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है यूरोप में। आप देखो ब्रेग्जिट, देयर वाज रीजन बिहाइंड ब्रेग्जिट, उन्होंने ऐसे अपने आप को डी से एसोसिएट कर लिया।